Students, another type of presentation technique is diagrammatic presentation of data. Diagrammatic presentation of data, you know student, that in this type of presentation techniques, you are presenting your information according to diagram. That is, with the help of different types of diagrams, you are presenting your information. And diagrams, you all know that whenever you want to do any kind of study, any kind of description of any kind of things or any information, so if you are presenting, if you are taking the help of diagrams, so diagrams are more effective and attractive, and also it is remember for a longer period. आप जब भी अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपनी कोई भी चीज़ आपको बताना रहता है, अगर आप उसको डायग्राम्स के थ्रू बताते हैं तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी, ज़्यादा इजी होगी समझने में, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी रहेगा. So diagrammatic presentation is a very good method of presentation, statistical inquiry, statistical investigation in a proper way. Now what is diagrammatic presentation of data? Data may be presented in a simple and attractive manner in the form of diagrams. किसी भी डेटा को अगर हम डायग्राम्स के थ्रू बताते हैं तो इट विल बी मेक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज सिंपल एंड इट विल बी अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव भी होगी, सिंपल टू अंडरस्टैंड भी होगी. Diagrammatic presentation has different types. The types of diagrammatic presentation are, first is geometric form. Diagrams के तीन तरह के presentation होते हैं. पहला है आपका geometric form, next is diagrammatic frequency diagrams, and third is arithmetic line graph, या इसको हम time series graph भी कहते हैं. So first is geometric form. Geometric form of diagrammatic presentation, you know student, it include two types of diagram. One is bar diagram and another is pie diagram. Under bar diagram, you have to make different types of bar diagrams to present your information, to present your statistical inquiry. And next is pie diagram, also you can make for presenting your information. Now second type of diagrammatic presentation is frequency diagram. Frequency diagram is of different type like histogram, polygon and ogive. That is, histogram you can make polygon, and frequency polygon is there, frequency curve is there, and ogive. With the help of this frequency diagram, you can present your information. Another type of diagrammatic presentation is arithmetic line graph, या इसको time series graph भी कहते हैं. इसमें हम line graph और time series के according हम अपने data को present करते हैं. Now student, these are the three different types of diagrammatic presentation of data, like geometric form of diagram, frequency, polygon, frequency diagrams are there, and arithmetic line graph. First of all, geometric form. Under geometric form, bar diagram and pie diagram is coming. So what is bar diagram? Bar diagram, you know, bar diagrams are those diagrams in which data are presented in the form of bars or rectangles. बार डायग्राम में हम जो अपनी स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स या रेक्टेंगल्स बार्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को पुटअप करेंगे. And bar diagram, you know that the different types of bar diagrams are there. Like first is simple bar diagram. Simple bar diagram, you know, कि when our area of study is small, when we don't have to put up so many information, so simple bar diagram is fit for that. And through simple bar diagram, we can present our information. That is, simple bar diagram is two types: horizontal bar diagram and vertical bar diagram. इसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को पुट अप करके सिंपल बार डायग्राम. नेक्स्ट इज मल्टीपल बार डायग्राम. मल्टीपल बार डायग्राम, यू नो स्टूडेंट, दैट इन द सेम ईयर अगर हम एक ही साल में बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन को अलग अलग बार्स के थ्रू बताना चाहते हैं, तो हम एक ही ईयर में हम बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल डायग्राम्स बनाएंगे, अलग अलग बार डायग्राम बनाएंगे, और इसको हम कहेंगे मल्टीपल बार डायग्राम. Next is subdivided bar diagram. Subdivided bar diagram, you know that students, when we want to present different information, not by making different types of bars, but in the same bar you are presenting your information. जब आप एक ही बार डायग्राम में डिवाइड करके उसको इंफॉर्मेशन को पुट अप कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी आपकी सब डिवाइडेड बार डायग्राम. नेक्स्ट इज परसेंटेज बार डायग्राम. परसेंटेज बार डायग्राम, you know that your information will be converted into percentage, and these different percentages are putting into बार डायग्राम. इन परसेंटेज में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज को हम बार डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट इज डेविएशन बार डायग्राम. डेविएशन बार डायग्राम इज ऑल्सो सिमिलर टू परसेंटेज बार डायग्राम. इसमें भी हमें परसेंटेज और डेविएशन के थ्रू बार डायग्राम को प्रेजेंट करना है. नेक्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम इज पाई डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम. पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम आपने पढ़ा होगा दैट वी हैव टू मेक अ सर्कल, and in that circle we have to divide the information in according to different degrees. You know that the circle is of 360 degrees,
So that 360 degrees should be converted into different degrees according to the information, according to the percentage of that particular data, and then we are presenting in pie diagram, और either it is known as circular diagram, और इसके थ्रू हम अपनी information को put up कर सकते हैं. So student, these are the different types of diagrammatic presentation of data. That diagrams जो है बहुत effective होते हैं, बहुत easily understandable होते हैं, simple होते हैं, और इसको समझने में भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एंड इसको हम इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है, उसको हम कई लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं. So with the help of diagrammatic presentation, that is through help of bar diagrams and frequency curves, frequency polygon and pie diagram, it is the best method of presenting statistical data into meaningful conclusions, and for further analysis also it will be very easy, और इसको समझने में हमें बहुत हेल्प मिलती है through diagrammatic presentation. So student, today you have studied that what are the different types of presentation of data, like descriptive presentation is there, tabular presentation is there, and next is diagrammatic presentation. तो ये तीन तरह के presentation techniques होती हैं. Either you can use descriptive technique of presentation, either you can make a tabular presentation, or either you can take diagrammatic presentation for presenting your information, your statistical investigation of data in a proper manner, or for further analysis, so that the meaningful conclusion can be drawn.